तो हम बिगिन करते हैं अरीबा एंड रोहा। ऑसिलेशंस क्या होती हैं? ऑसिलेशन इज 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 ए रेपिटेटिव मोशन। ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रेपिटेटिव है, ठीक है ना, सो अभी से दैट द object is performing oscillations or it's undergoing oscillatory motion. ठीक है ना? That's what an oscillation is. Now we have already learned about an example. ठीक है ना? Let me write down. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और elaborate करता हूँ. Oscillation is a repetitive motion. या you can say repetitive motion कह लें या repetitive variation कह लें. ठीक है ना? Repetitive variation typically in time ठीक है. तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. Typically in time of some measure about a central value or between two or more states. अच्छा, ये तो एक इसकी बहुत ही डिटेल्ड डेफिनेशन कह लें इसको आप. ठीक है ना. अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू और बिटवीन टू और मोर डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है. सो ऑसिलेशन क्या होती है? वेरिएशन होती है इन सम पीरियड ऑफ टाइम. वेरिएशन होती है, ठीक है ना, of any physical quantity of some measure about a central value. यानी एक सेंट्रल वैल्यू के अबाउट आपकी वेरिएशन होती है. ठीक है ना. एंड just not the variation in the displacement. Okay, I would say over here I would consider the displacement to be at zero at some central value. This is if you talk about a mechanical system, so this is what we call as an equilibrium state. ठीक है ना. ये आपका equilibrium state कहलाता है या equilibrium position कह लें, where you have the system isolated from all kinds of external forces. So that's you may consider over here. You may consider the value or the value of any physical quantity. Let's suppose if you are just studying the variation in the displacement. So over here the displacement is going to be zero, and about this central value, you would then study the variation that it's going to vary. And for example, if you have this spring mass system and you have this mass moved to some other value, it has been displaced in one direction. ठीक है ना. And then consequently at some other instant it has been displaced to some other point in the other direction. ठीक है ना. So this is that's what now we would call this as an oscillation. Now, secondly, and this motion, this kind of motion must occur repetitively. Only then it will be termed as an oscillatory motion. ठीक है ना. अच्छा, एक तो अभी हमने जो
स्टडी किया था ना सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन स्टडी किया था वो भी एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की, तो वहाँ भी ऑसिलेशंस हो रही हैं, और भी डिस्कस के वहाँ ऑसिलेशन कैसे हो रही है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आपका फॉर एग्जांपल एक किसी पोजीशन से ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर आपका किसी let's suppose this is a circular path, and around this path your object is moving, and at some point on this circular path you have this you have the object starting its motion. So once अगर वो ये circular path के along move करता है and come back to its original position once, so that will be referred to as one oscillation, and if it occurs and if it continues to do so repeatedly, then it will be called as that will be categorized as an oscillatory motion. That is the object undergoing oscillations, and particularly when the oscillations are such that the object is moving in a circular motion, so we in a circular path, so we also call that as a circular motion. ठीक है, यानी specifically जब आपकी oscillations जो है वो that are occurring in such a way that the object is moving that are occurring while the object is moving in a circular path. अगर circular paths के along move करते हुए अगर oscillations हो रही हैं, object is undergoing the oscillations while moving in a circular path, then we also call that as a circular motion. So circular motion is an example of an oscillatory motion. You don't have the object undergoing oscillations, or you don't have oscillations just in a circular motion, but there are various other systems or various other situations where the object do undergo oscillatory motion, or there are oscillations taking place. ठीक है ना? And one such example is an example of this spring mass system. ठीक है? Or I have this mass attached to this one end of the spring, and this is the unextended length of the spring. And over here, this is the original length of the spring. We have extended this spring up to this point, and the mass as well. And I have done so with this force FAM, that is the force of the loose. And we have already studied in AS as well that आपके पास जो है spring is going to, because this is the force that I'm exerting on this system. So this system, or you can say in other words, the spring is going to exert the force of equal magnitude upon me, but in the opposite direction. That's called as Fs, the spring force, and that's also a restoring force because it always acts towards the equilibrium position. It also always acts in such a way that it tries to restore the mass to its equilibrium position. ठीक है ना? And how does it so? Because अगर मैं यहाँ पे आपको explain करूँ तो if you have extended this mass up to this point, तो आपकी जो spring force है that will be acting opposite to the direction of my force. ठीक है ना? And of course I have displaced it from its equilibrium position. तो आपकी जो spring force है that will act in the direction such that it will try to restore to its equilibrium position. और अगर मैं if I do it the other way, अगर मैं इसे compress कर दूं mass को, spring को in fact, तो आपकी जो फिर spring force है that is going to act in this direction again towards the equilibrium position. ठीक है ना? तो आगे बात now remember that equilibrium position in any system is a position where you have the object isolated from all external forces. So over here the equilibrium position is a position where you have the spring isolated from all external forces or any unbalanced forces. ठीक है ना? When you have the spring not accelerating, ठीक है ना, the position at which you don't have the spring accelerating in any direction, so that is what we call as an equilibrium position. So over here you don't have the spring getting accelerated. ठीक है ना? So if it comes to rest over here at this position, so that's we call it as an equilibrium position, because over here you don't have any
the spring has the unextended length, and it does not have any strain energy in it. Of course, when you extend it or you compress it, the energy gets stored in the springs. And that's what we call as the strain energy. Yeah, elastic potential energy. That's something you studied in AS. ठीक है, जब हम एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर आपकी स्ट्रेन एनर्जी या फिर आपकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो गेट स्टोर्ड होती है, यानी कि as a result of extension or compressing the spring, the energy that gets stored in the spring is what we call as elastic potential energy or strain energy. So at the equilibrium position, the spring does not have any strain or elastic potential energy. It has its original length, or it has its unextended length. ठीक है ना? And also it is isolated from all unbalanced forces. ठीक है ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो स्टे करेगा ही तब जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी. अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो that you would then observe the spring moving, then getting displaced from this equilibrium position in either direction. तो अगर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होती है तो फिर आप you will always see the spring getting displaced from its equilibrium position either in this direction or in this direction. तो यहाँ पर अगर if I now going to remove my force, अगर मैं यहाँ पे अपनी force remove कर दूँ, तो right now at this position I have balanced this force by the spring. यहाँ पे जो force exert हो रही है by the spring उसको मैंने balance किया हुआ है अपनी force से. So the system is in equilibrium right now. But if I remove my force, if I release this mass, so you're going to have then the unbalanced force acting on the system, and that is going to be equivalent to Fs. And due to this unbalanced force, you're going to observe this mass and the spring getting displaced from this position. Or you will observe this system getting accelerated. ठीक है ना? फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो स्प्रिंग मास है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द resultant or unbalanced force, that is in this particular case that it will be the direction towards the equilibrium position. और फिर ये जो mass है that's going to pass through this equilibrium position, ठीक है ना, and then due to inertia it's going to get displaced again away from the equilibrium position in the other direction, and as a result of that the आपका जो स्प्रिंग है वो फिर कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है ना? अच्छा, अगर आपके पास कोई और एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इस फोर्स को बैलेंस करे, if you have all the time the unbalanced force equivalent to this, अगर आपके पास throughout the motion of this spring mass system अगर आपकी unbalanced force जो है वो Fs की इक्वल है और वो कम ज्यादा नहीं हो रही, अगर हम ज्यूम कर लें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है जिसकी वजह से आपकी जो Fs है, स्प्रिंग फोर्स है, वो बैलेंस नहीं हो रही और आपकी रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली एट ऑल द टाइम इट्स इक्विवेलेंट टू Fs, you would then observe कि आपका जो mass है that will continue to undergo continue to get displaced from the equilibrium position in both the directions, and so you would then say that the mass is undergoing oscillations. फिर आप कहेंगे कि ये जो mass है it's undergoing an oscillatory motion, क्योंकि इस unbalanced force की वजह से अगर ये बैलेंस नहीं हो रही तो फिर आपका mass जो है यहाँ से इस point से displace होगा, equilibrium position पे पहुँचेगा, and then due to inertia is going to get displaced on the other direction. Again, the maximum displacement you have from the equilibrium position of the mass is what we call as an amplitude. That is something that you know. And if throughout the motion, if the unbalanced force remains equivalent to Fs, तो फिर आपकी जो amplitude है in the other direction, it's also going to remain the same. ठीक है ना? Whatever you have in this direction is going to be the same on the other direction, and this amplitude is not going to. And then of course the mass is going to reach the highest point, the furthest point in this direction. ठीक है ना? Again having a same amplitude as it had before over here in the other direction. और फिर यहाँ से it's going to again go back through the equilibrium position and then to its original position, and then I would say that the mass has undergone one complete oscillation. ठीक है ना?
और इसी तरह if the unbalanced force on this system remains equivalent to Fs, so you would then observe this spring mass undergoing an oscillatory motion. That is, you would observe this mass moving back and forth across this equilibrium position. ठीक है ना? And the amplitude again won't change. But अगर मैं for example ये instance लूँ कि आपका जो magnitude है, ठीक है ना, अगर आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस आपका जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर आप ना ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है ना, वो कम होती जा रही है. यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एम्पलीट्यूड इनिशियली एट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, नाउ व्हेन यू रिलीज इट, कीपिंग इन माइंड कि आपका एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, तो आपकी इट्स गोइंग टू पास थ्रू दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन. Now, on the other hand, when it's going to get displaced due to inertia, it's not going to have the same amplitude. It's going to have a slightly lesser amplitude. ठीक है ना? और फिर इसी तरह जब वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन से होती हुई अपने it's not going to reach its starting position. और उसकी वजह क्या है कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका नेग्लिजिबल नहीं है. एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है ना, तो हो ये रहा है कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन द मास ऑन द सिस्टम इज नॉट एट एवरी इंस्टेंट इक्विवेलेंट टू एफएस. वो मुस्तकिल एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम होती जा रही है, और ऐसी बात है जब कम होती जाएगी तो फिर आपकी जो है ना वो एक्सेलरेशन नहीं होगी उतनी, ठीक है ना. एट एवरी इंस्टेंट द एक्सेलरेशन विल नॉट रिमेन द सेम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो वो है डिस्प्लेसमेंट है, फिर वो आपकी सेम नहीं रहेगी. And so the amplitude भी displacement ही होती है, but that's the maximum displacement, तो वो आपकी फिर same नहीं रहती है. That is what we call as damping. इसको हम at the end of this topic study करेंगे कि जो है होता ये है कि in a lot of systems where you have the mass or the object that is prone to undergo oscillatory motion, यानी कि जो आप कुछ ऐसे systems होते हैं तो जिनमें आप ऑसिलेशंस को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज दैट दे मे अकर ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है ना. देयर आर वेरियस सिस्टम्स, वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जहां आपके पास ऑसिलेशंस जो हैं दैट मे अकर, ठीक है ना, ड्यू टू not due to just one reason but due to multiple reasons. And so and not in all cases the oscillations are considered as useful or are good for the system. And in most of the cases, steps are taken to just subside the effect of those oscillations, or subside those oscillations, or to negate the effect of those oscillations. So how we do that is that we try to what is done is that an opposing force, the system is being opposed, ठीक है ना, it's an opposing force is being exerted on the system so that the object the oscillations, again the amplitude of during the oscillations, they come down gradually, ठीक है ना. अगर कुछ अब होता ये है कि कुछ सिस्टम्स में आपको जो है ना you need क्विक डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस, जहाँ आपको बहुत जल्दी आपको ऑसिलेशंस को करना होता है, कट डाउन करना होता है, तो वहाँ आपकी जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है ना, वहाँ वो ज़्यादा होती है. अच्छा, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ अगर ऑसिलेशंस हो रही हैं फॉर वन और मोर रीजंस, तो वहाँ आप ऐसा नहीं होता कि आप स्टेप्स लेते हैं ताकि क्विकली आपकी जो ऑसिलेशंस है वो कट डाउन हो जाए, बट रादर you just extend the time. You just take steps such that you don't need to cut down the oscillations all of them in a very short period of time, but you just extend the time, and वहाँ आपके पास जो डैम्पिंग होती है ना वो ग्रेजुअल होती है, ठीक है ना. तो वहाँ पे आपके पास जो हर इंस्टेंट पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड में जो चेंज आ रहा होता है ना वो कम हो रहा होता है, उसे हम लाइट डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है ना. एक होती है हैवी डैम्पिंग. तो हैवी डैम्पिंग में आपके पास जो हर इंस्टेंट में जो आपके पास जो अपोजिंग फोर्स है ना वो लार्ज होती है, तो हर इंस्टेंट पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा था ना वो भी ज्यादा हो रहा था,
So again, there are different types of damping that is introduced in a system to cut down the oscillations. So acha, Bharal, for this spring mass, I know that the spring force that is proportional to the displacement. The more you displace this mass, ठीक है ना, जितना आप इस mass को displace करेंगे, ठीक है ना, I'm just taking that displacement to be as an x, तो जितनी उसकी displacement होगी from its unextended length, जितना वो displace होगा, जितनी उसकी extension होगी, whatever, तो that's Fs is going to be proportional to it. उतनी ज़्यादा आपकी spring force होगी, क्योंकि दरअसल आपको उतनी ज़्यादा force खुद लगानी होगी to make that to get that spring displaced to that higher value of displacement. ठीक है ना, उसको आपको अगर higher magnitude of, अगर if you have to extend it more, so you have to exert more force, आपको खुद ज़्यादा force लगानी पड़ेगी, तो जो spring force होगी तो वो भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो Fs जो है ना, it's proportional to the displacement of the mass, or in fact not just proportional but also it acts opposite direction to the displacement. यानी कि जो आपकी spring force की direction होती है ना, वो displacement की direction की opposite होती है हमेशा. आप का जो mass है वो displace किस direction में हुआ, इस direction में, और आपकी जो spring force है that is going to always act opposite to the direction of displacement, that's always towards the equilibrium position. So यहाँ पर अगर मैं proportionality का sign हटाऊंगा, so that's going to be, I'm going to put up constant over here, so Fs is going to be minus kx. As के अंदर we just studied about the magnitude of the spring force, तो वहाँ हम ये minus sign incorporate नहीं करते थे, but actually this is minus kx. And why is that so? क्योंकि आपकी जो spring force होती है, it's always opposite to the direction of displacement. It's always opposite to the displacement. ठीक है ना, बात समझ आ गई यहाँ तक सबको या नहीं आई? दोनों को, आप दोनों को समझ आ गई सर. अच्छा, now this amplitude क्या होती है of a spring? A is the maximum displacement of the spring mass from the equilibrium position, which I have discussed. I'm going to discuss this point in a while. Achha, if I release it and allow it to oscillate, I know that it's going to undergo an oscillatory motion. और क्यों है वो oscillatory motion, वो मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है ना, कि आपके पास एक सेंट्रल वैल्यू, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिसके अक्रॉस, जिसके अबाउट जो है ना आपके मास की डिस्प्लेसमेंट हो रही है. दैट्स हाउ यू डिफाइन एन ऑसिलेशन, और ये रेपिटेटिवली हो रही है. ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो क्या है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो निग्लेजिबल है, तो आपका, और इवन अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल ना हो तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो मास है वो एक दफा डिस्प्लेस, अगर आपने रिलीज कर दिया तो एक ही ऑसिलेशन होगी, ऐसा नहीं है. This motion is going to occur repetitively. So you're going to have more than one oscillation. ठीक है ना, तो again अगर मैं रिलीज करूं mass को and allow it to oscillate, then the time period, which is a time taken by this mass to oscillate once, that is moving from its point of release, going through the equilibrium position, moving to the furthest point in the other direction, then coming back, then moving again back through the equilibrium position and coming back to its point of release. So that's how you, that is how your one oscillation is completed. ठीक है ना, और ये सब इसमें जितना वक्त लग रहा है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. To oscillate once completely is independent of how far I move it from its mean position. ठीक है ना, मतलब मास आपका which is the time taken by this mass to oscillate once is completely, अच्छा ये is नहीं है, ठीक है ना, which is the time taken by this mass to oscillate once is completely independent of how far I move it from its mean position. यानी कि ये जो आपका टाइम पीरियड है ना,
जो टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन का जो टाइम है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज टाइम पीरियड, तो वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर इवन इफ आई एक्सटेंड दिस मास मोर, अगर मैं स्प्रिंग को और ज्यादा एक्सटेंड करूं तो अगेन यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। अज्यूमिंग कि एयर इज नेग्लिजिबल है तो दूसरी तरफ की एम्पलीट्यूड आपकी सेम ही रहेगी। तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपका फिर ये नाउ इफ इन दिस पोजीशन व्हेन आई एम गोइंग टू रिलीज दिस मास, so the time, because the amplitude is greater, so the time period must be greater as well. It's moving through a much larger displacement. But what is non-intuitive is that you're going to have the same time period. If the spring mass system is the same, so आपका जो time period of the oscillation, that is independent of the amplitude. It's actually dependent on this mass. आपका जो टाइम पीरियड है ना ऑसिलेशन का, लेटर ऑन वी गोना सी इट, कि आपका जो टाइम पीरियड है इस स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो दरअसल आपके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होता है और इस ऑब्जेक्ट के मास पे, ठीक है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि इवन अगर आपकी एम्पलीट्यूड ज्यादा भी है तो आपका जो टाइम पीरियड है ना वो सेम ही रहेगा। यानी कि इवन दो इट्स गोइंग टू गो थ्रू अ लार्जर डिस्प्लेसमेंट to complete one oscillation, still going to have the same time period until you have the same spring and you have the same mass, ठीक है ना। तो and I'm going to show it mathematically कैसा है, and you can just perform it experimentally to prove that this idea as well. So the amplitude, as long as the spring obey Hooke's law, if you are just extending or the compressing that spring within the elastic limit, and in all the cases, if the spring mass remains the same, so you will see the period of the oscillation being is independent of the amplitude. The same thing is written over here as well, ठीक है ना। और वो कैसे, let me explain you that you have the resultant force acting on the spring equals to ma, and the resultant force is ms. Fs equals to ma. This Fs is equivalent to minus kx equals to ma. Now this is displacement, आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अभी जो a है ना, ये a क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। और इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखें तो s अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। v इटसेल्फ क्या होता है, s अपॉन टी होता है, अपॉन टी, s अपॉन टी स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, नाउ इफ यू यूज द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, जो चेंज हो रही है। अब आपकी एक्सेलरेशन चेंज होती है ना, तो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, या ये दैट गिव्स यू एन एवरेज और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट आपकी एक्सेलरेशन ना जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। So we express a as a derivative of, or as a rate of change of velocity. Now I'm just not going in detail at what is the rate of change of velocity, what is differentiation. This may be understood clearly by, this may be understood easily by Ariba. जो आप अगर ये अंडरस्टैंड ना भी करें ना तो कोई इशू नहीं, ये आपकी करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए समझा रहा हूँ कि जो फाइनल इक्वेशन है ना वो आपको पता चल सके कि वाई कैसे। बहरहाल तो मैं a को लिख लेता हूँ अरीबा एस dv over dt। अरीबा a can be written as a derivative of velocity, rate of change of velocity, और इसको हम लिख सकते हैं as a double derivative of displacement, ठीक है अरीबा। यानी कि acceleration is the derivative rate of change of velocity, and it can be also written as double derivative of displacement, ठीक है ना। सो एंड अगर आपके पास x है डिस्प्लेसमेंट, अगर x आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है तो x जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है ना उसको हम लिखते हैं x डॉट, यानी s ओवर t को हम लिखते हैं x डॉट। और आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो दरअसल क्या है कि मैं s ओवर t स्क्वायर है, एक्सेलरेशन खुद क्या है v ओवर t,
और v खुद क्या है, s ओवर t, तो s ओवर t क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन s ओवर t स्क्वायर। तो ये दरअसल क्या होगा कि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक दफा डिफरेंशिएट कर देंगे x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा x डॉट, 2 बार करेंगे तो हो जाएगा x डबल डॉट। तो यहाँ पे मैंने a को x डबल डॉट लिख दिया, mx डबल डॉट। और यहाँ मैं क्या करूंगा, I'm just gonna bring this minus kx on the other side, and this is actually what we call as a differential equation. That's something that you're going to learn very soon, Miss Ariba, in your P3. ठीक है ना, ये आप बहुत जल्द लर्न करेंगे इसके बारे में P3 में। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट अ मिनट, I'm coming. अच्छा, तो ये आपकी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना कैसे सॉल्व होगी, ये तो खैर आपके करिकुलम में नहीं, नॉट इवन इन मैथमेटिक्स, तो आप नहीं कर सकते सॉल्व। neither I'm going to explain you how to solve this differential equation, लेकिन मैं आपको I'm going to explain कि आपके पास जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब how what is going to be your displacement, अब डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन विद टाइम कैसे हो, ठीक है ना। अच्छा, देखो अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली अगर मैं इसको वो करूं, क्या कहते हैं, मैं आपको शो करूं कि जब आपका ये जो स्प्रिंग मैस है ये ऑसिलेट होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दरअसल ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपका स्प्रिंग मैस है, बल्कि मैं आपको ना अगर मुझे वक्त मिलता है मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो दैट्स गोइंग टू गिव यू 2 इक्वेशंस, ठीक है ना। यानी दैट्स गोइंग टू गिव यू 2 इक्वेशंस ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t। और ये कैसे आई, ये आई है थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कि जब मैंने इस स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाया, जब स्प्रिंग को मैंने इस मैस को ऑसिलेट करवाया, तो मेरे पास जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो दरअसल इस फॉर्म में आ रही है, फॉर्म ऑफ वेव्स, साइनसोइडल फॉर्म या फिर कोसाइन फॉर्म में आ रही है। या तो साइनसोइडल फॉर्म में आ रही है या फिर कोसाइन फॉर्म में आ रही है। अगर मैं जो है इसको एक्सपेरिमेंटली इलस्ट्रेट करता हूं तो यू वुड सी कि आपकी जो इस मैस की डिस्प्लेसमेंट है वो ऑन पेपर
उसकी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन कैसे होगी, दैट विल बी आइदर इन अ साइनसोइडल फॉर्म या फिर इन कोसाइन फॉर्म। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी ना इस मास की डिस्प्लेसमेंट की, यानी ये जो मास जब डिस्प्लेस होगा, ये मास डिस्प्लेस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन apparatus experiment, you always perform experiment to observe that how your displacement is varying. So you do so by just somehow representing the displacement of this mass when released. जब उसको हम रिलीज करेंगे, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन आएगी उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है ना वी गोइंग टू ऑब्जर्व बाय रिप्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली कि उसकी वेरिएशन कैसे हो रही है। एंड सो यू गोइंग टू ऑब्जर्व कि आपकी जो इस मास की जो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आ रही है दैट इज आइदर इन द साइनसोइडल फॉर्म, इस तरीके की वेरिएशन आ रही है, या फिर जो है ना इट्स आइदर इन कोसाइन फॉर्म। ठीक है ना। अब आपके पास ये कैसे है कि आपकी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो वहां आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर वो एक एंड पे जाता है, ठीक है ना। लेट्स थिंक ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट टू बी एज पॉजिटिव, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई। फिर ये दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। देन इट मूव्स इन द अदर डायरेक्शन, दैट मूव्स थ्रू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अदर डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। एंड देन कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट फिर आपकी जीरो है, क्योंकि जब आप पॉइंट ऑफ रिलीज पे वापस आते हैं तो वहां आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। सो यू कैन सी कि आपकी जो वेरिएशन है ना दैट इज नाउ टेक्स द शेप ऑफ अ साइनसोइडल ग्राफ। यहाँ पे आपकी जो वेरिएशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट में वो एक साइनसोइडल फॉर्म में वेरिएशन आ रही है। और अगर आप लेट सपोज मास को किसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, t इक्वल्स टू जीरो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फिर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि दैट्स द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। और फिर जो है फिर क्या होगा, फिर ये होगा इट्स गोना मूव थ्रू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अदर डायरेक्शन, और फिर ये दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना, अगेन जीरो डिस्प्लेसमेंट, एंड देन moving back to its point of maximum displacement in the other direction, तो अगेन इस पॉइंट पे आ गए। तो यू कैन सी नाउ कि आपके पास, और फिर अगर ये मोशन रेपिटेटिव है तो फिर आपकी जो वेरिएशन है दैट विल बी लाइक सच दैट ये आपकी यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, फिर ये सेकंड ऑसिलेशन, फिर थर्ड ऑसिलेशन एंड सो ऑन। तो ओवर हियर आपकी जो वेरिएशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, अगर आप एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं या रिलीज करते हैं अपना मोशन इस मास का, तो वहां पे जो आपकी वेरिएशन आएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास में वो आपकी कोसाइन फॉर्म में आएगी। एंड दैट्स समथिंग यू हैव ऑब्जर्व थ्रू एक्सपेरिमेंट by illustrating the variation in the displacement graphically। जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी जो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आ रही है जब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जो आपकी वेरिएशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट में उसको वो कैसी आ रही है, ठीक है ना। तो ये दरअसल अच्छा, अब अगर ये जो वेरिएशन आ रही है इन साइनसोइडल फॉर्म जो वेरिएशन आ रही है ना, तो अब आपकी जो आपने ऑब्जर्व किया थ्रू एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में आपने एक्चुअली किया गया कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आ रही है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास वेरिएशन इज ऑफ दिस सॉर्ट, इज ऑफ कोसाइन फॉर्म। तो अब मुझे पता है कि ये आपके पास मोशन की ग्राफ असल में मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस कैन बी अगेन रिप्रेजेंटेड यूजिंग एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस ग्राफ की, यानी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, यानी हम इस ग्राफ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। We're going to have a mathematical equation for this graph, and so what is that equation is this ax equals to a cos omega t plus phi, which is a sin omega t plus phi. This is when you have when you are releasing the mass from the point of maximum displacement, and this is when you are releasing it from the point of zero displacement. अगर आप equilibrium position से release कर रहे हैं
तो ये है आपकी फिर वेरिएशन ऑफ इन द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ दिस फॉर्म, साइनसोइडल होती है। फिर तो जो उसकी इक्वेशन होगी ग्राफ की, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। और अगर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करते हैं तो जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी तो आपकी वेरिएशन होगी दैट विल बी ऑफ कोसाइन फॉर्म। तो ग्राफ की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है ना। और इसमें ए जो है ना दैट्स द एम्पलीट्यूड। समझ गए आप या नहीं समझे? मैं सरीबा बात समझ आ गई जोआ? एंड दीज टू इक्वेशंस आर एक्चुअली द सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हमारी अल्टीमेट, जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमारी अल्टीमेट जो गोल क्या होता है कि हम फाइंड आउट करेंगे हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो राइट नाउ हम एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ एक्स इज वेरिंग विद टाइम। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैन्युअली सॉल्व करके भी ये रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं, बट वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दैट्स अगेन समथिंग टिपिकल एंड यू कांट अंडरस्टैंड दिस लेवल। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो लेकिन यस, यू कैन ऑलवेज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट and see how your displacement, how your x is varying with the time। और फिर जब आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वो स्टडी कर लेंगे वेरिएशन किस फॉर्म में हो रही है, तो उससे फिर यू कैन ऑलवेज फॉर्म द इक्वेशन। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई हैव डन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेरिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट हो किस फॉर्म की रही है, और फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग उसकी इक्वेशन है वो ये है। और ऑल्दो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इज डिराइव्ड बाय सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मैन्युअली। ठीक है ना? बात समझ आ गई या नहीं है रीबा एंड जोआ? समझ आ गई। अच्छा, अभी आप नमाज पढ़ लें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा। तो जोआ, तो हम थे वी हैव डिस्कस कि आपके पास अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो उसके बाद जो मेरी इक्वेशन है that would define the variation of the displacement of the time। तो either that will be this one or this one, depending on कि आपने किस पोजीशन से जो है वो अपने मास को रिलीज किया है, either from the point of maximum displacement। तो फिर इक्वेशन आपकी ये होगी। और अगर आपकी अगर आप पॉइंट, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने जो है वो रिलीज किया है, तो फिर आपकी जो डिफाइनिंग इक्वेशन होगी फॉर द डिस्प्लेसमेंट वो ये होगी। अब इसमें बेसिकली ए जो है ना दैट इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज द फेज एंगल। अच्छा, इसमें वी की क्या होती है? देखो वी बेसिकली क्या होता है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स और द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है। वो क्या होता है वो आप रहने दीजिए, यू जस्ट हैव टू यूज इक्वेशन। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि ये कैसे आया, कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो फिर आपके पास ये v की जो है ना वो इक्वेशन आई। तो v दरअसल आपकी x की जो भी इक्वेशन है, क्योंकि तो v जो है ना दरअसल वो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। हम यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर वो x डॉट है। तो हम जो s की यानी x की जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v की इक्वेशन आ जाएगी। और उसको दोबारा फिर v वाली इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x डबल डॉट, तो फिर आपके पास जो है ना एक्सेलरेशन की आ जाएगी। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो छोड़ दें। बहरहाल अगर मैं आपके पास अगर ये है अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं। आपकी अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है a cos ओमेगा ठीक है ना, अगर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, फिर आपकी v की इक्वेशन ये होगी, ठीक है ना, where a omega is going to be your maximum velocity। जैसे यहाँ पे आपकी a maximum डिस्प्लेसमेंट थी एम्पलीट्यूड, तो ये माइनस a omega that is going to be your maximum velocity, ठीक है ना। ठीक है,
और आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा v की, तो मेरे पास a की आ जाएगी, दैट विल बी x डबल डॉट, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो आपकी ये होगी, और उसमें आपके पास माइनस a ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है ना भाई? ये आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है ना? और ये आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये आपकी एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लें, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना? तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गई। अच्छा, अगर आपकी जो है ना ये है, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको, और अगर आपकी इक्वेशन x की ये है तो v की ये होगी और a की ये होगी। तो मैं आपको बता दिया कैसे आए ये। अब वो मैं आई एम जस्ट नॉट इन डिटेल कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बट ऑफ कोर्स बिकॉज यू डोंट हैव एन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड इन ए लेवल्स, तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, that is you have released the mass from its equilibrium position, तो फिर आपकी displacement की variation that is defined by this equation, तो फिर इसकी corresponding v की equation ये होगी और a की equation ये होगी, where a omega is going to be our maximum velocity and minus omega square is going to be our maximum acceleration. ठीक है ना? mass release from the point of maximum displacement, mass release from the main position. अच्छा, आपके पास now let's talk about again, let's apply Newton's second law. So you have the maximum force. अच्छा, ये जो आपकी resultant force है is a spring mass पे, so that's going to be m f max. Let's think of how much is the magnitude of the force when you have the maximum acceleration. अब जिस आपकी पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रही है, उस पोजीशन पे फोर्स कितनी होगी? लेट्स थिंक ऑफ दैट एज टू बी एफ मैक्स। और आपकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर, ये है ना, ए ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर है ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? मैंने मैक्सिमम फोर्स is when you have the maximum force, you have the maximum acceleration, which is a omega square. Actually, I can replace when you have the maximum force, so it's going to be minus kx. अब चूंकि when you, because we are talking about maximum force, so x is going to be your amplitude, the maximum displacement. Minus ka equals to, we have over here minus sign as well, minus, because that's minus a omega square, minus a omega square, minus m a omega square, and a is going to get cancelled. So we're going to be left with k equals to m omega square. So omega is going to be square root of k over m, and omega is 2 pi over t as well. तो मैंने यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 pi over t रख दिया, so square root of over m. So t is going to be then, t को मैं इधर ले आया और इस पूरे को मैं इधर ले गया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. So you have this t equivalent to 2 pi into square root of m over k, and from here what you can see कि जो आपका time period है that is actually the independent of the amplitude. That's what I discussed over here. ये जो आपकी amplitude है, ठीक है ना, that is the time period is independent of the amplitude. It does not depend how far you're going to move it from its mean position. So as far as your spring and the mass remains the same, because it's dependent on the spring constant and the mass of the object. So अगर आपका जो spring and the mass, if the spring constant and the mass remain same, so you would have then whatever the amplitude is, the time period is going to remain the same. ठीक है ना? It's independent of the amplitude. Again, it's something very non-intuitive. I explained you कि ये कैसे ये derive हुई है. ठीक है? So if I extend the spring horizontally with mass at one end, I feel force which is independent of mass. Okay, the force is therefore a fixed force. If I double the mass, it will give half of the acceleration, hence the period will go up. ठीक है ना? अच्छा देखो, if I extend the spring जो है horizontally, अगर मैं horizontally extend कर रहा हूँ spring को,
with mass at one end, I feel force which is independent of mass. The force is therefore a fixed force. ठीक है ना, क्योंकि वो independent of mass इसलिए क्योंकि वो force मैं खुद exert कर रहा हूँ. I'm not exerting the force in accordance with the mass. That is independent of the mass. ठीक है ना, जो मैं force exert कर रहा हूँ, चाहे वो mass ज़्यादा हो object का या कम हो, I'm just exerting a fixed force. So अगर मैं mass को double कर दूं, तो it's going to give you the half acceleration, क्योंकि मेरी जितनी force मैं exert कर रहा हूँ, that is the same. तो जो इसके opposite जो reaction force होगी opposite direction में, तो spring force है, वो भी of the same magnitude होगी. तो आपका अगर मैं mass release करता हूँ, तो मेरे पास resultant force क्या हो जाएगी फिर Fs, और चूंकि उसकी magnitude पे कोई फर्क नहीं आया, तो अगर मेरा mass बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो acceleration को यानी कि half हो जाना चाहिए. So if I double the mass, it will give half acceleration, और अगर acceleration half हो गई, so it will move a little slowly. ठीक है ना, and the period will go up. And I'm just explain you how if you vary m, so you can see that varying m, so double if you're just going to increase m, so t is going to get increased. It's directly proportional. T is proportional to mass. Time period is proportional to the mass of the object. ठीक है ना, और मैंने explain कर दिया कैसे. अच्छा, if अगर k की बारी करूं तो k inversely proportional है. अगर k बढ़ाऊंगा तो time period कम हो जाएगा. So if the k is high, the spring is stiff. अगर k ज्यादा है, दो springs से compare करो, जिसमें आपके पास spring ज्यादा है, वो spring stiff है, which means for smaller extension the spring force is high. For a given mass, the force is high for a given mass, and so the acceleration is higher, and therefore the period is shorter. अच्छा, आपका mass is not changing, ठीक है ना. अब आपका हो ये रहा है कि अगर आपकी k ज्यादा है, अगर k बढ़ा दूं मैं, थोड़ा स्टिफर स्प्रिंग अगर मैं इंक्लूड कर दूं, k बढ़ा दूं, तो k बढ़ाने से ये होगा कि आपने क्या किया है कि यू हैवंट चेंज द डिस्प्लेसमेंट ना, आपने एम्पलीट्यूड चेंज नहीं कर, मैं एम्पलीट्यूड उतनी ही रख रहा हूँ, यानी आपकी जो एक्सटेंशन है, लेट्स सपोज स्प्रिंग की आइदर कंप्रेशन और एक्सटेंशन वो सेम है, तो एफ एस इक्वल्स टू के एक्स होता है ना. तो फॉर सेम एक्स, अगर आपकी एक्स सेम है, इट्स नॉट changing the extension or the compression. So if you're going to increase k, so the spring force is going to go up. So for a smaller extension, the spring force is high for a given mass. And अगर fs बढ़ गई, तो मुझे पता है कि ये आपकी resultant force भी है सिस्टम पे, क्योंकि मैंने अपनी फोर्स रिलीज कर दी, तो आप सिस्टम पे उस mass पे सिर्फ ये spring force एक्ट करी है, resultant force भी है. और अगर ये बढ़ रही है, तो इसका मतलब acceleration बढ़ रही है, so the period is going to be shorter. It's going to move faster, the time period will go down, and k is going to get increased. Is it clear, Arif, Zohar, or not? जी सर, क्लियर है. So let's finish up with an example. When I start the oscillation, we have the choice of two things. जब हम oscillations start करते हैं, अच्छा, oscillation में again मैं आपको दोबारा recall करा देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि variations of displacement की हो, ठीक है ना. It can be a variation in different physical quantities depending on what kind of situation you have. It may be a variation in potential difference, or the current, or the displacement, or the velocity. So in all these situations, when you have these physical quantities varying about some you can say about a central value, when you have a variation in any of such physical quantities about a central value, or between any two different states, between two or more different states, and that variation, if that is occurring repetitively, so you term that as an oscillation. So keep in mind that you don't have to associate oscillation occurring in a system only when you have the variation in the displacement about a central value. No, that's not the case.
about any equilibrium position. You may have when you have a variation in, you may have oscillation in a system, even if you have a variation occurring in the in potential difference taken about some central value, and if that is occurring repetitively. So if when I start the oscillation, we have the choice of two things. I can start from a certain point which I choose. When I start the oscillation, we have the choice of two things. I can start from a certain point which I choose and end at that position. A certain position ले लें, which I choose and end at that position. हम उस position से start करूँगा, उसी position पर end करूँगा. Or the other way is that we can displace it from the zero or mean position at a certain velocity. अगर आप किसी point पे displace करने के बाद release करते हैं ना, so you don't have to give it some initial velocity. It's not going to have any initial velocity. It's going to release from rest, because you're just going to drop it and it's just going to release. It's going to just start accelerating. But अगर आप mean position से, when you are starting your oscillation from a mean position, then you have to give it a certain velocity. आपको कोई ना कोई velocity देनी पड़ेगी in other direction. Only then you will have the oscillation get started. All right. So that's why अगर मैं आपको यहाँ से explain करूँ ना, तो ये जो आपकी equation है, that's when you displace the mass from point of maximum displacement. तो यहाँ पर अगर आप t0 रख दो ना, let's take phase angle to be as 0 degree. Let's think of a very simple situation. Phi को हम 0 degree लेते हैं. So you just have a cos omega t. So at t0, so cos 0 is going to be 1. 0 times omega is going to be 0. Cos 0 is 1. 1 times a is a. So your displacement at t equals to 0 is actually your amplitude, because you are starting it from point of maximum displacement. तो उस point पे अगर आपकी जो velocity है वो क्या होगी, तो t0, तो phi तो 0 ही है, तो t0 times omega is 0, sin 0 is going to be 0, and 0 times a omega is 0. So velocity is going to be 0. So if you start it from the point of maximum displacement, so your initial velocity is 0. ठीक है ना? But you do have some acceleration. ठीक है ना? Cos 0 is 1. You have the maximum acceleration, because at the time if you are releasing it from the point of maximum displacement, so at that instant you have the resultant force. You have because when you're going to release it, as soon as you're going to remove your force, so you're going to have at that instant the unbalanced force acting on it equivalent to Fs. So उस position पे at the point of maximum displacement, you're going to have the maximum acceleration equivalent to minus a omega square. ठीक है ना? तो आपकी acceleration 0 नहीं होती. अच्छा, अगर आप mean या equilibrium position से release करते हैं, so the displacement is going to be 0, of course. The phase angle 0 ले लेते हैं. 0 times omega is 0, sin 0 is 0 times a. तो ये तो 0 हो गया, times a is going to be 0. Mean position से अगर आप begin करते हैं, so वहाँ पे आपकी जो displacement है वो तो 0 है. वहाँ पे आपकी velocity क्या होगी? You have to give it some initial velocity. And अगर phase angle is 0 हो गया, तो t आपका हो गया 0 times omega is 0, cos 0 is 1. 1 times a omega is equal to a omega, which means that you have to give it a certain velocity when you are starting the oscillation from the mean position, and that certain velocity is going to be a maximum velocity for that motion. ठीक है ना, a omega. और acceleration जो है ना, फिर in that case is going to be 0, क्योंकि at that instant जब आप उसे mean position से release कर रहे होंगे ना, by giving it a certain velocity or certain push, तो at that instant फिर आपकी acceleration जो है ना, फिर उधर you won't be having any, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ,
कि उस इंस्टेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कोई फोर्स नहीं है, या है भी तो बहुत निग्लेजिबल है। तो आपकी जो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है एफ एस, वो भी फिर क्या है, निग्लेजिबल है। तो अगर मैं पुश कर देता हूँ, मैं पुश करके मैं अपनी फोर्स रिमूव कर ली, तो फिर आपकी एफ एस भी फिर क्या है, निग्लेजिबल है। सो at that instant, at the start of the oscillation from the mean position, you don't have any resultant force or unbalanced force acting on it. That's why you're going to have the acceleration zero. ये जीरो है, ये जीरो है, साइन जीरो इज जीरो टाइम्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई या नहीं आई मिस जोआ? जी सर। When I start the oscillation, अच्छा अच्छा, हमें जब भी हमें देखो हमारी इक्वेशन के अंदर ना, कोई भी आपके पास मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो इक्वेशन है ना, दैट इज इनकम्प्लीट अंटिल वी हैव द वैल्यू फॉर ओमेगा एंड फाई। ठीक है ना, जो ओमेगा और फाई की वैल्यू पता होगी, सॉरी ए ओमेगा एंड फाई की वैल्यू पता होगी, सो देन योर इक्वेशन विल बी कंप्लीटेड फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है दैट ओनली एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ एक्स विद टी, सो यू नीड टू नो द वैल्यूज फॉर ए ओमेगा एंड फाई, एंड that is something you get to know from what we call as initial conditions। ठीक है ना, अब इनिशियल कंडीशंस क्या हैं कि मैं टी जीरो है और आई एम जस्ट रिलीजिंग इट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो एक्स भी जीरो है, एंड आई एम गिविंग इट अ सर्टेन वेलोसिटी प्लस 3 meters per second। ठीक है ना, प्लस 3 is necessary because that's defining the velocity in one direction, either towards the right or towards the left of the mean position। That's something not mentioned over here, but yeah, plus tells you that it must be in a certain direction, and so in the other direction it will be negative। And whatever the spring I have taken, it has a spring constant of 10 Newton per meter. Mass attached to that, to one end of the spring has the object attached to one end of the spring has a mass of 0.1 kilogram। The amplitude and phi and omega, I need to find out the values of these three, and these are what we call as initial conditions। ये आपकी क्या है, initial conditions जो available है हमारे पास। तो I'm gonna use this equation क्योंकि मैं रिलीज कर रहा हूँ from the mean position। तो ओमेगा कैसे आएगी, ओमेगा इजी है बिकॉज दैट्स इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ k over m, स्क्वायर रूट ऑफ k over m। आई नो k, आई नो m, ओमेगा आ गई 10, t आ गया 2 पाई ओवर ओमेगा, या आप इससे निकालना है t डायरेक्टली, व्हाटएवर, बात एक ही है, या फिर आप 2 पाई ओवर ओमेगा कर दो क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई ओवर t, तो ओमेगा आ गया, तो t क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, तो आप 2 पाई ओवर 10 कर दें, तो ये आपके पास t आ गया। ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालने, बात एक ही है, सेम ही आएगा। और फिर आप फ्रीक्वेंसी निकालने 1 over t is going to be 1.6 hertz। ठीक है ना, अब आप ये वाली कंडीशन यूज करें, आपकी इक्वेशन है, इस पे मेरे पास a की वैल्यू नहीं आई, फाई की नहीं आई, ओमेगा की आ गई है। x जीरो जब t जीरो जब जब t जीरो है तो x क्या जीरो है, तो मैंने जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, जीरो प्लस फाई इज फाई, साइन फाई रह गया इधर, और a को तो दूसरे वाले जाके खत्म कर दिया, तो साइन फाई इक्वल टू जीरो। अब मैं दूसरे वाले जाके इसको साइन इनवर्स करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, तो फाई आपका जीरो आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इनिशियल कंडीशंस में v भी दिया हुआ है, तो मैं पहले v की इक्वेशन लिखूंगा, जो v की इक्वेशन क्या है, अगर x की इक्वेशन ये है तो v की इक्वेशन ये है, v की इक्वेशन लिख ली मैंने। इसमें मैं जब टाइम t जीरो है, इनिशियल टाइम t जीरो है, तो v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 3 और 10 ओमेगा हो गया, a cos और फाई जीरो आ गया, तो ये 10 जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, cos जीरो इज 1, तो 1 into 10 is 10a, 3 divided by 10 is 0.3, so a आपका 0.3 meters आ गया। तो अब मेरे पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन हो गई, हाउ कैन आई राइट डाउन दी
equation representing the variation of displacement with time, that's 0.3 a sin omega t phi तो 0 है, 0.3 sin tan t। फिर वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, इसी में मैं पुट कर देता हूँ। तो वी हैव 10 इंटू 0.3 इंटू 10, ये है ना ये इक्वेशन। तो 0.3 इंटू 10 तो 3 हो जाएगा, cos ओमेगा हो गया 10t और फाई 0 है, तो 3 cos 10t। और एक्सेलरेशन की कैसे आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन मुझे बस याद रखनी है। इसमें हो जाएगा 0.3 इंटू 100 तो 30 हो जाएगा, -30 साइन ओमेगा साइन 10t फाई 0। ठीक है, तो आप बात समझ आ गई या नहीं आई? दैट्स हाउ यू फॉर्म इक्वेशंस। यू मस्ट बी गिवन सम इनिशियल कंडीशंस, उससे फिर आप a ओमेगा और जो है ना फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन गेट द इक्वेशन। एंड फिर आपके पास जब ये इक्वेशन आ गई ना, अब आपको किसी और इंस्टेंट पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो आप इसमें टी की या इंस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फॉर आइदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर मिस जोहा और नॉट? जी सर क्लियर है। अच्छा, हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, बट वी गोना डू द सेम थिंग नाउ फॉर अ पेंडुलम सिस्टम। ठीक है ना? फिर हम इन जर्नल वी गोइंग टू talk about the systems that have the oscillations। ठीक है ना? समझ आ गई बात, ये नहीं आई? जी सर समझ आ गया। 2-3 क्लासेस में इंशाल्लाह इस वीक आपको खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, कमिंग वीक में।